Assalamu alaikum friends. This is me Mohammed Nisar Khan and welcome to the day 5 of the 21-day learning SQL challenge. Hope everyone is good, everyone is fine. So after so much struggle we are here in day 5 and the work on consistency is on and it is and hopefully we will gonna achieve our objectives for today. Hopefully inshallah. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डे 5 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डे 5 डे 5 में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको डे 5 में खुश आमदीद कहता हूँ 21 दिन के चैलेंज के। और आज का चैलेंज बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। और आज जो एक चीज़ है जो कि मैंने चैट जीपीटी को बताया, चैट जीपीटी के साथ चेंज करवाया है, वो ये था कि डे 4 के बारे में कुछ हमारे दोस्त जो थे वो मुझसे ये पूछ रहे थे सोशल मीडिया पे कि यार यहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है और ये रियल लाइफ में नहीं होता। तो फिर जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ इसी तरह होता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो उसमें आज के जो प्रोग्राम है, आज के जो हमारा एजेंडा है, उसमें एक चीज़ चेंज हुई है। वो ये है कि आज सिर्फ चैट जीपीटी एक सवाल मेरे से पूछेगा, कोई हिंट नहीं देगा मुझे टेबल के बारे में या कॉलम्स के बारे में। So friends, for day 5, yesterday during our day 4 live session, I also discussed, and after the session, some of you friends asked me on social media, specifically that in real life, nobody asks from you to get the data from a specific table or column. Mostly it never happens. Uh, Only the thing is that they ask you a question and you have to decide because you know the data at that point, while the person asking the business question, he needs to get he needs to get the data or the specific information. So for today what we have done, that we have changed some rules for today's agenda. We have asked ChatGPT that you will only ask me a single question, only the question, and you won't be giving me any hint about the table or the column. Okay, so okay, uh, in this way we can before moving forwards let एक दफ़ा कनेक्ट कर लेते हैं इसको, इस SQL के सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं। Now let's begin with our day 5, shall we? Day 5 is on question 1, no hints mode. Okay, you understood the assignment? The business question. How many customers do we have in each gender category? I only care about genders that have more than 5,000 customers. डे 5 स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन नो हिंट मोड में वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हमें कितने कस्टमर्स हमारे पास हैं, हर कैटेगरी में, हर जेंडर की कैटेगरी में हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं। और मुझे सिर्फ उन कस्टमर्स का है जो कि 5,000 से ज़्यादा हैं। उन जेंडर्स के कस्टमर्स की मुझे परवाह है जिनकी तादाद 5,000 से ज़्यादा है, जिनकी तादाद 5,000 से ज़्यादा है। अभी इसकी कोडिंग को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉपी शॉपी उठा के इसको थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी कस्टमर्स, हाउ मेनी पे हमने एक
हाउ मेनी में हमने एक दफ़ा पहले भी एक दफ़ा गलती की थी। हाउ मेनी जब और चैट जीपीटी ने हमें बताया था कि भाई जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई हाउ मेनी, तो फिर आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कि भाई अब मैंने इस हाउ मेनी को सॉल्व करने के लिए काउंट और स्टार का फंक्शन लगाना है। याद है वो जो सवाल था? ठीक है। तो अब इतना तो हो गया। अब ये है कि सवाल ये है कि हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं। सबसे पहले तो हर कैटेगरी में, इन एवरी कैटेगरी। ठीक है, हमारे पास कस्टमर्स जो हैं हर कैटेगरी में कितने हैं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। और उसके बाद है कि मैं सिर्फ आई ओनली केयर अबाउट दोज कस्टमर्स, ओनली केयर अबाउट जेंडर्स, सॉरी, आई ओनली केयर अबाउट जेंडर्स दैट हैव, जिनके पास 5,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स, ठीक है। तो अभी सवाल मुझे समझ आ गया टोटली। ठीक है, सवाल वो कह रहा है कि भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे पास एक मेल की कैटेगरी, एक फीमेल की कैटेगरी है, हर कैटेगरी में कितने कस्टमर्स हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई मुझे सिर्फ उस जेंडर को मैंने कंसिडर करना है अपने आगे एनालिसिस के लिए जिनमें 5,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। मतलब कि ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेल है और फीमेल है। ठीक है, मेल अगर 4,000 है और मेल या फीमेल, सॉरी सॉरी, फीमेल अगर 4,000 है और मेल 6,000 है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो अब इसमें सिचुएशन ये है कि जो मेल अगर 6,000 है तो फिर मुझे सिर्फ ये जेंडर मेल का देखना है क्योंकि ये 5,000 से ज़्यादा है। ठीक है, ये फीमेल का पहले तो काउंट करके तो चेक कर लो, लेकिन मुझे चाहिए वो वाला जेंडर जिसमें 5,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हो। शायद इन्होंने कोई चीज़ ऐसी है बनाई है जिसको ये बेचना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा पब्लिक को। तो खैर है, अभी इसको अटेम्प्ट करते हैं, इसकी क्यूरी लिखते हैं टर्मिनल पे। सबसे पहले तो कस्टमर है, तो हमारे पास जो डेटाबेस यूज़ होगा वो कस्टमर का होगा। सबसे पहले कस्टमर की जाके टेबल्स चेक करते हैं। कस्टमर्स पे जाके कस्टमर टेबल तो है, कस्टमर टेबल से तो हमने ये सवाल करना है। तो कस्टमर टेबल में हमारे पास क्या क्या है? कस्टमर टेबल में हमारे पास जेंडर है, जेंडर ऑब्वियसली होगा, जेंडर है। ठीक है, बस यही कंफर्म करना था। अब इसको ख़त्म करते हैं। अब ये इधर आ गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि फ्राम, ठीक है, क्या डिम, क्या कस्टमर। ठीक है, हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया। हमने कहा कि भाई कस्टमर टेबल से आपने इसको करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो हाउ मेनी कस्टमर्स डू वी हैव। तो अभी हाउ मेनी कस्टमर्स डू वी हैव के बारे में मैंने एक दफ़ा भी आपको पहले भी बताया है कि हमें काउंट और स्टार का लगाना है फंक्शन। उसके बाद हम जाके उसको, क्योंकि हाँ टोटल कस्टमर्स, ठीक है, मैं ज़रा इसको अटेम्प्ट करता हूँ फिर देखते हैं। फ्रॉम सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट काउंट स्टार, नो ओके। फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम देते हैं, लास्ट नेम देते हैं। ठीक है, जेंडर, ठीक है। उसके बाद क्या है? काउंट, काउंट स्टार,
is total नहीं total customer group by gender having group by gender having having the group by how customers do how many customers do we have in each category. I only care about customer. I only care about genders that have more than 5,000 customers. Again. इतना ठीक है from the customer select first name select last name select gender count star as total customers ठीक है अब कंट्रोल शिफ्ट
जैसे ये सिंगल सवालात हो गए तो फिर ये तो मुश्किल होना शुरू हो गया, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड, क्योंकि यही चीज़ मुझे चाहिए थी. हाउ many customers do we have in each gender category, मेल फीमेल में कितने कस्टमर्स हैं हमारे पास. सबसे पहले इसको हल करना, हाउ मेनी कस्टमर्स वी हैव इन ईच कैटेगरी. सबसे पहले दोबारा फ्रॉम हशीश, नहीं फ्रॉम जेंडर, नहीं यार, फ्रॉम डिम कस्टमर सेलेक्ट. हमारे कितने कस्टमर्स हैं. सेलेक्ट. सबसे पहले तो हमारे पास हर कैटेगरी में कितने कस्टमर्स हैं. काउंट. एंड जेंडर क्लॉज जो है क्या करता है, वेयर क्लॉज जो है क्या करता है, वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज जो क्या करता है, फिल्टर्स इंडिविजुअल, फिल्टर्स इंडिविजुअल
individual rows before they are grouped. ठीक है, before they are grouped. ठीक है, उसके बाद group by clause, group by clause. ठीक है, इसका जो group by clause है वो क्या करता है, ग्रुप करता है group with identical values into summary rows, often for aggregation, ठीक है। उसके बाद थ्री क्या है, हैविंग क्लॉज, filters those grouped based group rows based on based on aggregate values. Okay, so let's try to from 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 select count customer filters individual rows. ठीक है, group by clause, group rows with identical values in the summary row for every game. ठीक है, अब इसका क्या होगा, group by gender. ठीक है, group by gender having. अब इसके बाद group by के बाद having लगता है, group by having customers and so after so friends, after some deliberation, some hit and trial, I have come up with this query, and let me explain you this query before I enter the
run button here. Before I run this query or execute this query, let me give you an explanation why I have selected this query. Now, as the question was phrased that how many customers, that means that we have to select all the customers here, okay? And then after selecting all the customers, then we have to categorize them into two categories, male and female, okay? So I have selected all the customers here, and I have referred to them as total customers from the dimension table of customers. And then I have grouped by what, those counted rows I have grouped by into genders. And then I have applied filter, because after after aggregating, you cannot apply where, because where is only applied as a filter to individual rows. So I have used the having is used after aggregating. You can use having to apply as a filter. So I have applied this as a filter, where I have again used the count gender greater than 5000. So with this thing, I think so I will be managed to there is no, as of now there is no syntax problem. So yeah, let's press execute, shall we? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर बड़ी कोशिश के बाद ये क्यूरी मैंने डिज़ाइन की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में क्योंकि हाउ मेनी की बात थी, और हाउ मेनी में हमने सबसे पहले तो सारों को काउंट करना होगा, सारे कस्टमर्स को। तो और उसके बाद उसने कहा था कि वो जितने कस्टमर्स हैं उनको फिर आपने कैटेगरी में भी डिफाइन करना है, दो कैटेगरीज में, मेल फीमेल में। तो उसके लिए हमने उसको ग्रुप बाय कर दिया। ग्रुप बाय का मतलब उनको तकसीम कर दिया दो अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, ग्रुप बाय जेंडर्स। और जब ये टोटल कस्टमर्स मेल और फीमेल में तकसीम हो गए, फिर हमने फ़िल्टर लगाया ग्रुप हैविंग का। हमने इधर वेयर का फ़िल्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि जो वेयर वाला फ़िल्टर होता है वो तब लगता है जब हम इंडिविजुअल रोज़ की बात कर रहे हों। अगर कोई चीज़ एग्रीगेट हो जाती है, ठीक है, वंस इट इज़ एग्रीगेटेड इनटू अ ग्रुप, देन वी हैव टू अप्लाई हैविंग फ़िल्टर। फिर हमने हैविंग का फ़िल्टर अप्लाई करना होता है। तो हैविंग का मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया और ग्रेटर देन 5000। लेट्स सी, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। Alright, so this is the result. 9133 and 9351। तो ये रिज़ल्ट आया है 9133 और 9351। इट्स प्रीटी गुड। तो हमें वो जो दो जेंडर्स चाहिए थे, ठीक है, हमें दो जेंडर्स चाहिए थे। हमें वो जेंडर्स चाहिए थे जिनमें 5000 ज़्यादा कस्टमर्स हों। तो इसका मतलब दोनों जेंडर्स में 5000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो दोनों शो हो रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं ये जो है ना, यहाँ पे एक और लाइन हो, सेलेक्ट, एक और सेलेक्ट जेंडर। तो आए ना यार, ये गलत हो रहा है, जेंडर। हाँ, there you go, bingo. So to solve this query, I have selected the gender. Okay, I have selected the gender, and then I have counted all the customers, because we have a how many phrase here. Okay, so I have selected all the customers, and it will count all the rows here, and I will refer to these counting or this aggregation as total customers. And from the obviously customer table, which is also our dimension table, and then we will be group by those aggregates into two different gender categories, male and female. And after aggregating them, we will be applying having filter.
Okay, not where filter, because where filter is used for rows, while having filter is used after grouping, grouping some after aggregating. Okay, so after aggregation we apply having filter. So I have written the having filter, having applied having filter, count gender greater than 5000. Then I have run the query, and you can see that our results are good, they are perfectly fine. The female is 9133 and the male is 9351. Now we will move forward. Now we'll move forward with the next question. We will send this query to ChatGPT to see what he gets for us. तो यहाँ पे अब मैंने जो अभी जो मैंने इधर क्यूरी लिखी है, इसमें मैंने सबसे पहले तो जेंडर को सिलेक्ट किया क्योंकि जेंडर की बात हो रही थी। उसके बाद मैंने काउंट किया जितने भी रोज थे, जितने भी रोज थे इसमें, उस सारों को मैंने काउंट किया, टोटल कस्टमर्स सारे जितने भी रोज थे सबको काउंट किया। और क्योंकि उनमें से कोई ना कोई, सारे तो कस्टमर्स हैं ना हमारे, तो वो सारों को मैंने काउंट किया और उनको एक रेफर कर दिया एज अ टोटल कस्टमर। उसके बाद उनको मैंने सेलेक्ट किया फ्रॉम, कहाँ से, डायमेंशन, डायमेंशन, उस डायमेंशन से जो कि कस्टमर टेबल है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैंने, क्योंकि उसको टोटल रोज को हमने काउंट कर दिया था, फिर हमने उनको ग्रुप बाय कर दिया। क्या कर दिया? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब उस टोटल जो रोज हमने काउंट की थी उनको दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेल फीमेल। ठीक है। जब, और उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया फिल्टर, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट थी, जो कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि 5000 से ज़्यादा अगर कस्टमर्स हैं तो फिर उनका डेटा मुझे चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में 5000 से ज़्यादा, कौन से जेंडर में 5000 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भाई दोनों मेल फीमेल कैटेगरी में, दोनों के दोनों जो हैं वो 9000 हैं। तो इसका मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास दोनों का रिजल्ट आया है। तो अभी हम इसको चैट जीपीटी में सेंड करते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देता है। Now, after pasting our query to ChatGPT, the results were clean, confident, and correct. This is exactly how day 5 no hint query should look. Review of your query. Review my query. Correct aggregation logic, proper group by, correct use of heavy, not where, business requirement fully met. Micro optimization. Okay. Optional but not required. Having count star greater than 5000. Both are valid here because gender is not null. But your version is perfectly acceptable. This is interview safe SQL. Okay. Means we could have, instead of this, we could have, written count star also, which would have been more optimized. Our results are same. Results are same. There's nothing to be worried about the results, but it was a great question then. चैट जीपीटी के साथ जब हमने शेयर किया अपना क्यूरी, तो चैट जीपीटी ने कहा कि इट इज़ गुड, इट इज़ करेक्ट, कॉन्फिडेंट भी है, क्लीन भी है। फिर उसने थोड़ा सा और फर्दर रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि करेक्ट एग्रीगेशन लॉजिक आपने अप्लाई किया है, आपने ग्रुप बाय का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, और हैविंग आपने यूज़ किया इंस्टेड ऑफ वेयर, जो कि एक बताता है कि आप बड़े एक्टिव हैं इस बार। ठीक है। और उसके बाद माइक्रो ऑप्टिमाइजेशन, उसने कहा कि आप बेशक आपका जो क्यूरी है उससे आपका रिजल्ट तो हमें मिल गया, हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन आप इसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में एरर के चांसेस ना हो। आप इसकी जगह इधर लगा सकते हैं शिफ्ट स्टार। ठीक है, शिफ्ट स्टार लगा सकते हैं और ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब
और बहुत सॉलिड है। Now moving to question 2 of day 5. There are no hints, obviously. So the business question. The business question is as phrased. What is the average income for each gender? Only show genders where average income is above 60,000. No hints, no column reminders, no safety nets, right? Everyone ready. डे 5 में जो क्वेश्चन 2 है वो सवाल है कि भाई एवरेज इनकम क्या है हर जेंडर का, ठीक है, और सिर्फ वो जेंडर्स आपने शो करने हैं जिनका एवरेज इनकम 60,000 से अबव है. लेट्स राइट द क्वेरी हियर. लेट्स गो फॉर द क्वेरी. क्वेरी लिखते हैं अभी. So it is what is the average income for each gender, show only the genders. Well, average income is about 60,000. So gender, okay, from dim customer. Select what is the average income for each gender. Select gender. Select gender. Average. Gender average income. Okay. Greater than greater than
is the average income for each gender? Average income. Gender. Having group by gender, having select gender, average yearly income, average income, team customer. Sorry guys, पानी का थोड़ा सा ब्रेक लिया था. तो having पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्या लिखी थी, having average, having average yearly income greater than 60,000. ठीक है. Average income. What is the average income for each gender? सबसे पहले तो दोबारा इसको देखते हैं. ठीक है. Income for each but condition consider करनी है. Average income is above 60,000. Select select gender, comma, average
एवरेज किस चीज़ का? Now I have selected this query for question 2. It was quite easy. So what I did was I selected gender, and I selected first of all I selected the table, which is the dimension table customer, and then from there I selected the gender. Obviously I need gender, and then the average of the yearly income is average income, and then I grouped them by gender, and after that I applied the condition which was asked of me, that having average yearly income greater than 60,000. Okay, so when I control shift E I pressed, so there is no answer here. Now one thing which we have learned before, that there is a concept of zero error. That means that your query is right, but when it does not exist in the data, so it does not show you any result. Now when this result appeared, I was a bit confused. I thought that there is a problem with my code, but after a couple of reviews
I realized that my query is right, but there's something wrong with the A couple data weeks here. So ago, just we to had a check, couple just of to Delta verify guys this, reach out wanting their episode pulled because Delta made a statement basically scaring the shit out of all their guys. Oh, you can't go on here. We're going to come after you legally. And I had to tell them, I'm tired of playing this game. They think they're not allowed to talk about their own life. I'm not pulling it. I'm not doing it anymore. A couple weeks ago, we had a couple of Delta guys reach out wanting their episode pulled because Delta made a statement basically scaring the shit out of all their guys. Oh, you can't go on here. We're going to come after you legally. And I had to tell them, I'm tired of playing this game. They think they're not. Who here wants to see real economic growth and results in our city? Right this time. Yeah? Let's make it happen by transitioning our teacher staff from our current diverse lineup to a selective high-achieving team. क्वेश्चन 2 का जो क्वेरी है वो हमने ये लिखी है। इसमें सबसे पहले तो हमने कस्टमर टेबल को हमने सिलेक्ट किया और फिर वहाँ से हमने जेंडर चाहिए था क्योंकि जेंडर की कैटेगरी हमें चाहिए। जेंडर के साथ साथ हमने जो एवरेज इनकम है उसका एरियल इनकम का एवरेज लिया है। This isn't just any chat, it's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask questions, and even drop an emoji. But the real magic is how it connects to the rest of my... सारे एवरेज इनकम्स को 2 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है जेंडर पे। उसके बाद जो कंडीशन जो मेरे से पूछा गया था कि 60,000 से ज़्यादा हो तो वो कंडीशन भी हमने पेश की। ठीक है, तो वेडिंग इनविटेशन है क्योंकि ग्रुप शादी होने वाली है उसकी। किससे? वेयर नहीं हैविंग तो कराम जी से। तो फिर तो जो एवरेज इनकम का जो कंडीशन था जो दूल्हा बर्बाद होगा और क्या था वो लगा दिया था। तो जब चलो हमने लगा कि उसको एग्जीक्यूट किया चलो तो हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो इसका मैं पहले तो परेशान हुआ, फिर बाद में तो पहले भी सर प्लीज अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें तो मैं पता करूंगा कि ये कौन थे। है जी? आप कंप्लेन नहीं करना चाहते ना तो इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा? देखिए एसीपी साहब, हमरा जो गया सो गया। ये बात प्रेस में नहीं आनी चाहिए बस। फिर भी आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। बिना एफआईआर के हम लोग क्या कर सकते हैं? आप इन ऑफिसर्स को सस्पेंड तो कर सकते हैं। उस दिन ये लोग टनाटन मदद कर रहे थे उन चोर लोगों का। मंत्री जी चोर उचक्कों का बहस छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं, बिना एफआईआर के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मेल फीमेल दोनों हैं। अरे आप समझते काहे नहीं हैं? पब्लिक में कछु इमेज है हमरा। अगर पता चल गया कि वो 4 लोग आके हमारी बैंड बजा दिए तो हो गई हमारी नेतागिरी फिनिश। ना जाने दीजिए। रणवीर सिंह सर। लानत है, अब हम चोर उचक्कों की मदद करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं सर। मिनिस्टर साहब केस नहीं कर रहे हैं, वरना पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होगी और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तो मैं और शांति को सस्पेंड किया जाता है। गॉट इट? सर। सी यू सर। एकदम ठीक किए सर कि इन दोनों को सस्पेंड करवा दिए। लीजिए सर। हाँ।
आजा बच्चों से मिलवाता हूँ तेरे को। बेटे ये सुखविंदर है, ये परविंदर है, ये मनिंदर है, ये जितेंद्र है, ये हरविंदर है, ये धर्मिंदर है। इसकी शादी है टिंकी की। और ये मिसेस शर्मा है, और ये अजय है, इकबाल है, जोगिंदर है, और ये अभी हुई है। इसका नाम नहीं रखा अभी तक। बस ओए, तब हमारे जमाने में टीवी नहीं था ना यार। कमाल है। ओए चल फोटो खींच। अच्छा किया शादी में आया तू, रौनक लगा दी तूने। आप बुलाए और मैं ना हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। और दसो खुराना साहब। तुम लोग जाओ, मैं बात करता हूँ। जी। खुराना साहब? हाँ, ये लोग सोचते मैं यहाँ का आईजी पुलिस हूँ। कुछ बड़ा सोचे यार, बच्चे बड़े हो गए। अब पहले वाली बात नहीं, अब डर लगता है। कल रात मुझे सपना है कि मेरा दामाद मुझसे मिलने जेल में आया है और तू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आपने ठीक से देखा नहीं, बिल्कुल ठीक आपके पीछे खड़ा होता मैं। अगला कहाँ पर है? अच्छा, कलकत्ता। कलकत्ता में कहाँ? बड़ा बाजार। अच्छा है। करना कब है? 1 हफ्ते बाद। बड़ा है छोटा है? छोटा। कुछ बड़ा सोचना यार। बड़े के लिए और लोग चाहिए और उनको रखने के लिए और पैसे चाहिए। नौकरी कर रहा होता तो ये मेरी रिटायरमेंट की एज होती। पिछले 5 साल से आप यही कहते आ रहे हैं। नहीं, अब मैं सीरियस हूँ यार। ये आप पिछले 3 साल से कह रहे हैं। ये लीजिए, इसमें टिकट्स और पैसे हैं। आप जोगिंदर और इकबाल मुझसे डायरेक्ट मिलिएगा, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। ख्याल रखना। जी। अब्बू अब्बू अब्बू। बस एकदम छुटनी वाली। राहुल का फोन है। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? हाँ भाई राहुल, कहाँ? आ रहा हूँ मैं। कुछ अर्जेंट है, थोड़ी देर में आता हूँ। आप ऐसे ही जाएंगे? हाँ जी, कोई नहीं। मॉर्निंग सर। पक्का वही है? जी सर, बस आपसे तो कभी मारा है वसीम भाई। वही है? हाँ भैया। मैं क्या इधर आ, चल। हाँ भैया वही है। जा सर, चल। Only show occupations where show occupations where the average income is greater than $55,000. ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस सवाल को मैंने 3 हिस्सों में, इस सवाल को करने के लिए मैंने 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हर ऑक्यूपेशन मेरे पास एक नया कॉलम है। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम माई डेटाबेस। ठीक है, इंग्लिश ऑक्यूपेशन, जस्ट अपने सेव से कोई भी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी कस्टमर्स डू वी हैव। हाउ मैनी अगर है तो इसका मतलब ये है कि काउंट स्टार, सबसे पहले तो ये। ठीक है, काउंट स्टार। ठीक है,
और उसके बाद ओनली शो ऑक्यूपेशंस और उसके बाद यहाँ पे अगर कंडीशंस लगा रहा है तो उसका मतलब इसमें ग्रुप बाय हैविंग वगैरह सब कुछ है। इसको अटेम्प्ट करते हैं। फ्रॉम dim कस्टमर select English occupation. Select English occupation. Select English occupation. ठीक है। occupation. English occupation is greater than English occupation. English occupation. English occupation. ठीक है। अभी count, ठीक है, count कि how many आ रहा है। count total customers, count as total customers, group by English occupation. English occupation having इसमें ज़रा ये आवाज़ चेक करके आता हूँ कहाँ से आ रही है। आवाज़ का इशू था वो सॉल्व कर दिए। अब इस पे क्या कहा थे, यहाँ पे इंग्लिश ऑक्यूपेशन पे एवरेज इनकम, ठीक है, एवरेज या ईयरली इनकम का, क्योंकि हमें चाहिए ओनली occupations having. Germany spent $1 billion on this building and then left it empty. This is the ICC Berlin, once one of Europe's most expensive mega projects, now sits abandoned. Finished in 1979, it was built to host the world, global summits, massive conferences, and thousands of visitors at once. At the time, it looked like the future, but that future didn't last. As the years passed, the building became too costly to save. Fire safety issues and outdated systems meant upgrades would cost hundreds of millions more. So in 2014, Germany shut it down. In 2019, ICC Berlin was placed under heritage protection, meaning it cannot be demolished. Instead, Berlin launched a 99-year redevelopment competition in 2022, with plans to turn it into a tech, cultural, or innovation hub. Final decisions are expected around summer 2026. Today, this $1 billion giant still sits silent in the... This is exactly how much I made in my first year in FIFO offshore. I'm not going to lie to you, this is not easy work. It's 12-hour days and we're literally in the middle of the ocean. Anyway, this was my bank account before I landed the job in my first week offshore. Then in the second week offshore, I only had this much in my account because my dad sent me it, because we only get paid monthly out here. We work 2 weeks on and 2 weeks off. So this here was my first pay slip after working out here for my first swing. I got up to over $14,000, and honestly,
honestly, when you see this payslip hit your bank, it makes it all worth it. This next payslip was after working out here for just over 8 months. We already hit well over 6 figures, up to 123,000. And keep in mind, everything on this rig is also free. So make it over 123,000 on my 8th month out here. Finally, just over a year offshore, my bank account hit well over 200,000. Well, not well over 200,000, a little over 200,000. And yes, we do have to go to toilet in toilets like this. And yes, the fish does eat it at the bottom. But all of this is all in hindsight when that money hits your bank, and it really does make it all worth it. You have free accommodation on board, free food, free flights in and out, and you're getting up to 6 months off a year. So how can you complain working out here? It's available for both male and females, and there's also jobs on the rig that don't require any qualifications. If you're serious about joining, check the website in our bio. We have a complete step-by-step guide that shows you how to get on board. This is exactly how much I made in my first year in FIFO offshore. I'm not going to lie to you, this is not easy work. It's 12-hour days and we're literally in the middle of the ocean. Anyway, this was my bank account before I landed a job in my first week offshore. Then in the second week offshore, I only had this much in my account because my dad sent me, because we only get paid monthly out here. We work 2 weeks on and 2 weeks off. So this here was my first pay slip after working out here for my first swing. I got up to over $14,000, and honestly, when you see this payslip hit your bank, it makes it all worth it. This next payslip was after working out here for just over 8 months. We already hit well over 6 figures, up to 123,000. And keep in mind, everything on this rig is also free. Work today is broken. We're all working in too many disconnected. सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तकसीम किया ब्रेक डाउन किया। सबसे पहले तो हर ऑक्यूपेशन के लिए, दूसरा है कि हमारे पास कितने कस्टमर हैं, हाउ मेनी कस्टमर्स, और सिर्फ उन ऑक्यूपेशंस को दिखाना जहाँ पे जो एवरेज इनकम है वो 55,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले कस्टमर टेबल है वो यूज़ की जगह बैलेंस टेबल भी है। फिर उस कस्टमर टेबल से हमने कस्टमर्स का एवरेज इनकम उसके बाद हम करते हैं ग्रुप बाय किसमें करते हैं, एक इंग्लिश ऑक्यूपेशन में और दूसरा एवरेज इनकम That iron one, that melon सब थ्योरी एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते, ग्रुप बाय something like that. क्लॉज यूज करते हो। ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। First day in Cyprus. Oh, hey there, buddy. Do you live here? Oh, wow. You have a lot of friends here, huh? Hey, that's my food. 1 week in Cyprus. Cats are really everywhere. Oh, and those cute little baby cats. Oh. 1 month in Cyprus. What? There's 2 million stray cats living in Cyprus? It's more than the human population. Well, that explains a lot. No wonder it smells like cat pee everywhere. This island is just one big litter box. 1 year in Cyprus. That is the cutest little cat I've ever seen. Maybe you should give it a home now that I have a house here. Come here, little fella. I'm gonna call you Fliffy. 10 years in Cyprus. Come, my little children. Dinner's ready. Is correct, so that's the result. My treat? Kill. Everybody was going crazy. ठीक है। हमारे पास आया कि प्रोफेशनल से मैनेजमेंट के जो हमारे पास तनख्वाह है एवरेज वो 1,60,000 है। ठीक है, तो इससे क्योंकि अब थ्योरी पे रन होगी, ठीक है, हमारा रिजल्ट भी आ गया, तो अब हम इसको ChatGPT के बारे में क्या कहते हैं। No, so long. We're all by. You are so ChatGPT thinks of it.
I thought that because we write the query correct, there was no problem with the syntax. We also got the result. My query was correct. But ChatGPT says that nice attempt. This is very close. The mistake you made is actually great learning moment, perfect for a live stream. Okay. Review of my query is reviewing my query. Okay. From the mission customer. Okay. English occupation, yearly income. Okay. The issue important. You should not group by yearly income. Okay. Why should I not do that? Why? Because the business question is for each occupation. Okay, so by grouping level must be occupation only. When you add yearly income to group by, you are no longer grouping by occupation, you are grouping by occupation plus income, which breaks the logic. Okay. So yearly income was not required, it was only the English occupation would have been fair enough. English occupation would have been fair enough. Now, the version is select English occupation and everything is right except for the yearly income. Key rule to say on stream, only group by what you want, one row per. Only group by what you want, one row per. If you want one row per occupation, then group by English occupation, not income, not gender, not anything else. This is a very real world, common real world mistake, so catching it now was excellent. Okay, so you have to focus on whatever the group you are told to. So it's a great learning moment only for each occupation, and the reason was because the question was placed in this way. And welcome to day 5 of the 21-day learning SQL challenge. Hope everyone is good, everyone is fine. Income or average income, it was for each occupation. So after so much struggle, we are here in day 5. So it's a great learning moment. Thank you ChatGPT. तो ChatGPT को जब हमने ये कॉपी पेस्ट किया तो ChatGPT ने कहा कि सब कुछ तुम्हारा ठीक है, लेकिन एक इशू इसमें है। इशू ये है कि भाई ईयरली इनकम हमें चाहिए नहीं था। मेरा जो क्वेश्चन बिजनेस का सवाल था वो ये था कि भाई मैं तुमसे जो ग्रुपिंग मांग रहा था वो मैं हर ऑक्यूपेशन के लिए मांग रहा था, ईयरली इनकम के लिए नहीं। जब आप ईयरली इनकम ऐड करते हो तो फिर वो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ठीक है। तो सो ग्रुपिंग लेवल मस्ट बी ऑक्यूपेशन ओनली, ठीक है। जब आप ईयरली इनकम भी ऐड करते हो तो फिर वो लॉजिक ख़राब हो जाती है, ठीक है। और इसमें की रूल ये है कि ओनली ग्रुप बाय व्हाट यू वांट पर रो पर, एक रो पे। जैसे अगर आपको एक रो पे ऑक्यूपेशन चाहिए तो फिर आप सिर्फ इंग्लिश ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हो और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड में कॉमन मिस्टेक है, तो फिर आपने इसको करना है, ठीक है। तो इसको हम अब ख़त्म करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर ये तो लाइन 4 में ये कह रहा है, अच्छा ये है। After learning our mistake from ChatGPT, we removed the yearly income. Now, so this is our result, professional and management. Okay. Before, when we added yearly income, there were a lot of rows. Now we only have Khan and welcome to day 5 only the occupations, 21-day learning SQL challenge. Hope everyone is good, everyone is fine. Okay. So after so much struggle, we are here in day 5, and for example, if we put the consistency, the work consistency of simplicity, just to understand whether, yeah, we also get clerical skill and manual. Okay, so 55,000 it is. A great learning moment. Okay, only group by what you are asked for. If you want the data one, if you want to group them by one per row, and that is for English occupation. तो ChatGPT की हमने बात सुनी और हमने वो ईयरली इनकम हटाया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। और इसमें सिर्फ एक प्रोफेशनल और मैनेजमेंट का प्रोफेशनल और मैनेजमेंट के ऑक्यूपेशन ऐसे थे कि जिनकी जो एवरेज इनकम है वो 55,000 से ज़्यादा थी। तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए मुझे पहले लगा कि शायद यही दो ऑक्यूपेशन हमारे पास हैं। तो फिर मैंने इसको एक दफ़ा 20,000 करके चेक किया कि आया सिर्फ हमारे पास ये दो ही हैं या कुछ और भी हैं। तो पता चला कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा भी 2-3 और हैं, इसके अलावा भी होंगे। अगर वो 10,000 पे आएंगे तो और कम होगा, ठीक है। तो एवरेज इनकम देखें,
10,000 20,000 मैंने चेक किया तो एवरेज इनकम इसमें आ गया क्योंकि हमारा टारगेट तो 55,000 Favela guy João Pedro tried to bully the steroid guy Adama Traore mid-match, but instantly regretted it. It all started in the last game, when Cucurella took Adama down like that. Adama took it personal. He waited for the next match on pure revenge mode. This time, Adama absolutely tossed Cucurella around like a ragdoll. Seeing that, Pedro lost his head and pushed Adama from behind. Adama turned around and look at that reaction. He looked like he was about to eat Pedro. So day 5 question 4. No hints final for today. Business question. Which customer education levels have more than 1,000 customers? What is the average income for each of those education levels? No hints. Same rules. This one will test whether you truly understand group by or having write the query when ready. तो क्वेश्चन 4 जो आज का फाइनल क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि भाई कौन से कस्टमर के एजुकेशन लेवल है उसमें कौन से एजुकेशन लेवल पे 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं. ठीक है. एजुकेशन लेवल का मतलब ये है कि एफएससी जिन कस्टमर्स ने किया उनकी तादाद कितनी है, बीएस जिन्होंने किया उनकी तादाद कितनी है, और बाकी जो बीए बीएडी ये जो छोटी ये टिंग पटांग ये चीज़ें हैं जितनी भी डिग्रीज़ हैं उसमें कितनी तादाद में हमारा प्राइमरी पास कितनी है, सेकेंडरी पास, और एफएससी किन्होंने किया है, ग्रेजुएट्स कौन है, मास्टर्स पीएचडीज कितने की, कस्टमर्स की तादाद कितनी है. ठीक है. व्हाट इज़ द एवरेज इनकम फॉर ईच ऑफ दिस एजुकेशन लेवल्स. और एवरेज इनकम क्या है हर एजुकेशन लेवल के लिए. जैसे एफएससी के लिए क्या एवरेज इनकम है, बीएस के लिए क्या एवरेज इनकम है, मास्टर्स के लिए क्या एवरेज इनकम है, पीएचडी के लिए क्या एवरेज इनकम है. तो ये एक बड़ा टिपिकल सवाल है, बड़ा मतलब ये क्योंकि मेमोरी जो प्रैक्टिस की मेमोरी है वो जब एक दफ़ा डेवलप हो जाती है सोच आफ्टर सम ब्रेन स्ट्रॉमिंग तो वो थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेट करना शुरू हो गया है. ठीक है. तो अब इस पर थोड़ा सा डिलिब्रेशन करते हैं और इसको थोड़ा सा राइट डाउन करते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए. इस पर हमें क्या चाहिए. सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन को तकसीम करूँगा ताकि फिर वो ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि वो तुम्हें ग्रुप बाय और हैविंग की सही में समझ है कि नहीं, या ऐसे ही मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो. ठीक है जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया. विच Which customer education levels have more than 1,000 customers? What is the average income for each of these education level? कौन सा customer levels customer education levels have more than 1,000 customers? सवाल का तकसीम करते हैं. कस्टमर education customers education levels customers education levels customers education levels. सबसे पहले तो ये कस्टमर का एजुकेशन लेवल, उसके बाद उसमें मोर देन 1,000 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स, और व्हाट इज एवरेज इनकम. व्हाट इज एवरेज इनकम. एवरेज इनकम क्या है फॉर each of those education levels. उन दोनों एजुकेशन लेवल्स के लिए एवरेज इनकम क्या है. ठीक है.
customer education level सबसे पहले from dim customer from dim customer select सबसे पहले चेक करते हैं ना एजुकेशन लेवल में क्या सीन है उसने तो पूछ लिया मैं भी चेक करूँ total children yearly income dim customer होनी चाहिए education which customer education level education select हमें क्या करना English education ठीक है क्या करना है English education select English education ठीक है एजुकेशन लेवल पे बात हुई which customer education level has सबसे पहले customer English education level ठीक है इसको चेक करते हैं कंट्रोल शिफ्ट बैचलर्स इसमें सारे लगते हैं काउंट एजुकेशन काउंट पता लगाया कि सबसे पहले पता करो कि कितना एजुकेशन लेवल है और बस 5 है ग्रेजुएट डिग्री बैचलर्स पार्शियल कॉलेज पार्शियल हाई स्कूल ये ठीक है इंग्लिश एजुकेशन में ये फिर तकसीम होता है ठीक है which customer education level have more than 1000 customers तो which customer education level ये पाँच है ना टोटल 5 अगर किसमें 1000 से ज़्यादा है सारों में 1000 से ज़्यादा है मतलब 5 शो होंगी ये तो कंफर्म है what is the average income for these education levels count total count as total customers count as total customers average yearly
income is income ठीक है ग्रुप बाय तो इंग्लिश एजुकेशन का है ठीक है इनकम ये है ना ये हो गया आके हैविंग लगाएंगे ठीक है हैविंग हैविंग down greater than 1000 perfect bravo 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 ये अच्छा था ये अच्छा था टू द पॉइंट बात की है ठीक है अब ठीक है भाई ठीक है ठीक है so to solve this question uh, to solve the question so to solve the question 4 which was the final for today we selected the dimension for which is our customer table okay and then we selected the English education as the education level okay and after that we counted all of the people counted all the rows as total customers and then because we were already asked we were also asked for the average income so we also took the average for the yearly income as average income and then we grouped them by from English education and then we apply the condition which was that customers education level having 1000 more than 1000 customers so all these are greater than 1000 which means that all five are included in this result hence our query is correct without any syntax error as of now and our results are showing that progress so now we will be sharing this query to ChatGPT and let's see what ChatGPT has to say about it okay तो इसके लिए क्वेश्चन 4 को अटेम्प्ट कर जो भी क्वेश्चन 4 को अटेम्प्ट करने के लिए जो कि आज के हमारा फाइनल क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के सबसे पहले तो हमने टेबल सेलेक्ट किया जो कि हमारा कस्टमर टेबल था जो कि हमारा डायमेंशन टेबल भी है फिर हमने उसमें से सेलेक्ट किया इंग्लिश एजुकेशन का कॉलम और फिर हमने काउंट किया जो टोटल काउंट किए एज अ टोटल कस्टमर्स और फिर हमने एवरेज इनकम भी कैलकुलेट की क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा था और फिर हमने उनको ग्रुप बाय किया इंग्लिश एजुकेशन से ठीक है और किसी और चीज़ से नहीं
और उसके बाद ये था कि फिर हमने उस पर कंडीशन लगा दी, जो फ़िल्टर की कंडीशन थी, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1000 के मतलब हमें इंग्लिश एजुकेशन पे पहले तो उसको ग्रुप करो, जो टोटल ये है, जो टोटल आपका कस्टमर्स है उनको, और उसके बाद जो एवरेज इनकम है उसको भी किस पे ग्रुप करो, इंग्लिश एजुकेशन के लिए मुझे टोटल कस्टमर्स का भी बताओ कि कितने कस्टमर्स हैं हर एजुकेशन लेवल में, और उनका एवरेज इनकम भी बताओ। और उसके बाद ये कंडीशन भी लगाई कि भाई 1000 से ज़्यादा हों, ठीक है, 1000 से ज़्यादा कस्टमर हो तभी आपने मुझे शो करना है। तो क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स की अगर तादाद देखें तो सबके 1000 से ज़्यादा हैं, सारे 1000 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब हमारा रिज़ल्ट भी ठीक है, क्यूरी भी ठीक है। तो अभी हम इसको चैट जीपीटी से पूछें, और चैट जीपीटी से पूछते हैं तो चैट जीपीटी क्या कहता है। What does ChatGPT says? Excellent, calm, correct. This is exactly how a day 5 closing query should look like. Review of your query. Why this is right. Count aggregation, count average, correct grouping level education, correct use of having for aggregated filtering, and perfect alignment with the business question. Nothing to fix, nothing tweak. And this is the production ready SQL. So ChatGPT is impressed, and so am I. Okay. तो चैट जीपीटी कहता है कि ज़बरदस्त, आला और बेहतरीन, ठीक है। और वो कहता है कि मैंने आपके क्यूरी को रिव्यू किया, तो इसमें ये सही क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो एग्रीगेशन आपने सही किया, काउंट भी किया आपने, एवरेज भी उसका सही निकाला है। उसके बाद जो करेक्ट ग्रुपिंग लेवल है, आपका ग्रुपिंग लेवल भी करेक्ट है, ठीक है, एजुकेशन लेवल को भी आपने सही से ग्रुप किया है। उसके बाद आपने एग्रीगेटेड फिल्टरिंग पे भी काम किया है, और ये परफेक्ट अलाइनमेंट है बिजनेस क्वेश्चन के साथ। इसमें ना कुछ चेंजेस करनी है ना कुछ और तब्दीली करनी है, तो ये है प्रोडक्शन रेडी सीक्वल है। सो अभी कहता है कि यार डे 5 now ChatGPT says day 5 is officially completed. Thinking in business questions, translating into aggregation, group by versus having clean separation, avoid overgrouping, a big win. Writing queries without hints, interview mode. You are operating at a junior middle level data analyst mindset. Wow. ChatGPT कह रहा है कि भाई आपने जो आज किया है, मास्टर किया है, वो ये है कि भाई आपने बिजनेस क्वेश्चंस के बारे में सोचना शुरू किया है। आप उनको एग्रीगेशन पे भी उनको कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और उसके बाद आपने ग्रुप बाय और हैविंग में एक बड़ा अच्छा फ़र्क आपने खुद आइडेंटिफाई किया है, वो मैं समझता हूँ, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया है उसका भी। और आपने ओवर ग्रुपिंग एक दफ़ा कर दी थी, बाकी आपने नहीं की। और अब क्यूरीज जो है आप विदाउट हिंट, जो कि बड़ी अच्छी बात है, इंटरव्यू स्टाइल में आप कर रहे हो। नाउ यू आर ऑपरेटिंग एट अ जूनियर मिड डेटा लेवल, मिड डेटा एनालिस्ट माइंडसेट, ठीक है। अब ये है कि क्वेश्चन डे 6 में क्या होगा कि भाई हम फैक्ट्स टेबल को यूज़ करेंगे, जैसे डे 6 के लिए वो बता रहा है। डे 6 के लिए वो बता रहा है कि भाई आपने फैक्ट्स टेबल प्लस मैट्रिक्स यूज़ करने हैं। हम फैक्ट जनरेट सेल यूज़ करेंगे, और मेजर्स लाइक टोटल सेल्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, रेवेन्यू, और हम केपीआईज के ऊपर सवाल करेंगे। ये सिंटेक्स ड्रिल नहीं है। व्हेन यू आर लाइव अगेन से लाइव, और रेवेन्यू इनटू बिजनेस मोड। आउटस्टैंडिंग वर्क टुडे, दिस वाज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये खुश हुआ है, ठीक है। So on the next day we will be doing these facts tables plus metrics, and we will be using the fact internet sales and measures like total sale, average order revenue, revenue by time, product, customer, and we will be working on answering real KPI questions, not just syntax drill. Okay, so that means day 6 is real business. Now we are talking about real data analyst, data analyst things. But I think so. It's perfect for day 6. Is excellent. Follow this tomorrow. Follow this tomorrow. Okay. Follow this tomorrow. Okay.
follow this tomorrow. The agenda is perfect for day 6. Follow this tomorrow. Okay. But I so give last question that would be asked. All right. See you. Bonus question. Now I told ChatGPT because I told ChatGPT that we have some time left in our let's see how much time we have left in our 2-hour session. Although 4 hours are good enough, but we have 20 minutes more, so I just said that why, how about one extra question, just a bonus question, because I'm feeling the energy, I'm feeling the vibe. So ChatGPT asked me this final bonus question with no hints and the KPI mindset which I am talking about, a real analyst mindset. Okay, the business question. What is the business question? Which customer genders have generated total sales greater than 10 million, and what is the total sales amount for each of these genders? That is it. No hints. You decide which tables, how to connect them, how to aggregate. This is hands off from dimensions to facts, and it is exactly where analyst levels up. Write the query when ready. Tomorrow day 5 pure KPIs. Okay, क्योंकि हमारे पास टाइम था, एक 20 मिनट हमारे पास थे 2 घंटे के हमारे सेशन में, तो मैंने चैट जीपीटी से कहा कि उस्ताद मोहतरम एक और बोनस क्वेश्चन हो जाए ताकि वो एक ब्रिज हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 20 मिनट हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो सवाल पूछ लेते हैं। विच कस्टमर्स gender have generated total sales greater than 10 million? ओके, और क्या टोटल सेल है हर टोटल सेल अमाउंट है हर जेंडर के लिए। दैट्स इट, यू डिसाइड विच टेबल्स एंड हाउ टू कनेक्ट देम, व्हाट टू डू, और ये सारा कुछ अब हमने करना है। अब क्योंकि ये हम डायमेंशन से फैक्ट्स की तरफ मूव हो रहे हैं, तो जब हम फैक्ट्स टेबल की तरफ मूव होते हैं तो फिर हम केपीआईज पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा वो वाइब्स आ रही हैं कि थोड़ा मतलब को होता है ना कि कुछ हो रहा है, कुछ समझ आ रही है सवाल की। तो खैर इसको करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम अपने कॉपी में जाके ज़रा इसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर इसकी क्यूरी लिखते हैं। कस्टमर्स जेंडर, कौन से जेंडर ने, मेल या फीमेल ने जनरेटेड ग्रेटर देन 10 million, greater than 10 million. What is the total sales amount for each? And total sales amount for each of those genders, total sales amount for each of those genders, ठीक है। That is it. No hints. You decide which tables and how to correct them. Okay, let's get down to business, shall we? Which customers have generated total sales greater than 10 million, and what is the total sale? ठीक है, सबसे पहले total sales greater than तो मैं ज़रा इसमें करता हूँ। सबसे पहले मैं सेट करता हूँ, मैं ज़रा जाके डेटा चेक करता हूँ कि क्या सीन है मामलात। फैक्ट इंटरनेट सेल्स पे काम करते हैं, इंटरनेट सेल्स ज़्यादा है, ठीक है। फैक्ट इंटरनेट सेल्स, क्या हम डायमेंशन हैव फ्रॉम
fact internet sales select fact internet sales ठीक है which customer interest generated total sales ठीक है total sales for each of these क्या है टोटल इधर क्या है इधर दोबारा इसमें जाके चेक करते हैं फैक्ट इंटरनेट सेल्स को सेल्स अमाउंट अच्छा सेल्स अमाउंट है select sales amount hello select sales amount from this अब इसको चेक करते हैं ठीक है सेल्स अमाउंट आ रही है ग्रुप बाय कस्टमर हाँ सेकंड है इनवैलिड इन द कंटेंट फैक्ट इंटरनेट सेल्स ठीक है फैक्ट इंटरनेट सेल्स प्रोडक्ट की फैक्ट इंटरनेट सेल्स इसको इसको फिर मैं कैरी करता हूँ कि ये मुझे लगता है थोड़ा सा जॉइन शोइन की तरफ चला गया है क्योंकि इसमें एक डायमेंशन है और एक फैक्ट इंटरनेट टेबल है और क्योंकि ये 4 सवाल हो गए 4 सवाल भी बहुत हैं क्योंकि 4 सवाल बहुत हैं और टाइम भी कम रह गया है तो अब इंशाल्लाह इसको दोबारा कल डे 6 से हम कंटिन्यू करेंगे उसमें इसी सवाल से कंटिन्यू करेंगे ठीक है ये सवाल पहले कल हल होगा फिर जाके हम बाकी जो क्वेश्चंस 4 होंगे उसको हम अटेम्प्ट करेंगे ठीक है क्योंकि ये एक ब्रिज क्वेश्चन है कि पीआई माइंडसेट से है और इसमें हम उसको भी फैक्ट टेबल की तरफ चले गए हैं तो फिर कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह होपफुली हम इस पर काम करेंगे So the problem is the time is a bit short at this point with me. So as this question is also relevant to our day 6 practice tomorrow, so I would be
I would be much better off doing it tomorrow along with the other questions for the day 6 live session. Okay, so that would be great for me, that would be awesome for me, and I would be reading some, some more materials about these dimensions and facts, which would allow me to solve these questions more properly. And I will be, reading some things about. I think so. The question now here we will be focusing on joins, so we should be ready for them. Anyways, guys, this is it for today. This is it for today. Hope you enjoyed it. Hope you enjoyed all the 4 questions and the discussion. The tips which were given to us by ChatGPT. And this is Nisar Khan. Don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to turn on the bell notification so you do not miss any updates. And I will see you tomorrow. Inshallah. Allah Hafiz. यार हम इस तरह करते हैं ना कि ये जो डे 6 है, ये जो फाइनल बोनस क्वेश्चन है, इसको कल ही करते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली KPIs के साथ रिलेट करता है. अभी थोड़ा सा टाइम का मेरे पास इशू आ गया है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें जॉइंट शॉइन वाला सीन आ गया है. तो इसको थोड़ा सा मैं और स्टडी करूँगा कि फैक्ट्स और डायमेंशंस को किस तरह साथ लेके हम चलेंगे. तो उससे ये होगा कि हम इस सवाल को कल बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे. और इंशाल्लाह कल ये सवाल हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो कोई इशू नहीं है. तो मैं हूं मोहम्मद निसार खान, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें. ठीक है, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन रखें, ताकि कोई भी अपडेट्स मैं शेयर करूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. तो सारे अपना ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम. सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें. ठीक है, और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी ऑन रखें, ताकि कोई भी अपडेट्स मैं शेयर करूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. तो सारे अपना ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम.